So new point is a taxonomy in relation to ecology. So ecology means is a branch of biology. Ecology is the branch of biology that deals with the relation of organism to one another and to their physical surrounding. Okay, ecology क्या है? Branch of biology that deals with the relations of organisms, right? Relations of organism to one another and to their physical surrounding. For example, आप लोगों ने इकोलॉजी में फूड चेन्स पढ़े होंगे, है ना? Studying the food chain in wetland areas means the branch of biology dealing with the relationships of organisms with their environment and with each other. Okay, हम इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जो relationship of organisms with their environments and with each other. Okay, समझ में आया इकोलॉजी क्या है? FY में होगा तुमको इकोलॉजी, आई थिंक जूलॉजी के अंदर फूड पिरामिड्स देखे होंगे, फूड चेन पढ़े होंगे, था ना जूलॉजी में? हेलो, आर यू लिसन माय वॉइस? हाँ मैम था। हाँ तो कब बोलेंगी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। तो हमको यहाँ पे इकोलॉजी का रिलेशन देखना है टेक्सोनॉमी से। तो टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व ज्योग्राफिक एक्सप्लोरेशन, टेक्सोनॉमिक डिस्कवरीज एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विथ अलाइड स्पेसीज। Taxonomy involves geographic exploration. Taxonomic discoveries exhibit a complex relationship with allied species. Allied species means related by a common characteristics or a common ancestor. Okay, allied species in the light of ecotype response to a plant. Plant ecotypic variation and ecophysiological correlation have become a vital in consideration of taxonomy. Okay, मीन्स इकोटाइप क्या है? इकोटाइप इज अ स्पेसीज, क्या होता है? टाइप और अ काइंड ऑफ थिंग. स्पेसीज इज अ टाइप और अ काइंड ऑफ थिंग, while ecotype is a ecology. Okay, ecology is a group of organisms, normally a subdivision of a species that is adapted to a specific environment. Okay, ecotype is a group of organisms, normally a subdivision of a species that is adapted to a specific environment. तो यहाँ पे इको वेरिएशन है, इकोटाइपिक वेरिएशन मीन्स इकोटाइपिक वेरिएशन इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. Okay, type ecotypic variation is a type of genetic variation found in a large continuous geographic population. So taxonomy involve a geographic exploration. Taxonomic discoveries exhibit a complex relationship with allied species. यहाँ पे किसके साथ में? Allied species के साथ में complex relationship है in the light of ecotypic response to a plant, ecotypic variation and ecophysiological correlations. Ecophysiological is the study of how the environment means both physical and biological. Okay, physically भी और biological भी. The study of how the environment, both physical and biological, interact with physiology of an organism. It includes the effect of climate and nutrients on a physiological process in both plants and animals, and has a particular focus on how physiological process scale with the organism size. Okay, so ecotypic variation and ecophysiological correlation have become a vital in consideration of taxonomy. Okay, तो आप लोगों ने ये नोट्स से रेफर करना है ये पॉइंट, देन डायरेक्टली यहाँ से इकोटाइप मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे. इकोटाइप
मैंने अभी बताई व्हाट इज इको टाइप. Ecotype ecological studies can help in determining the taxonomic status of a species. Ecology is a studies can help in determining the taxonomic status of a species. Species say, what is a species? हम हमेशा पढ़ते हैं ना स्पेसिस वर्ड. मैंने इको टाइप नहीं पूछी हूँ, स्पेसिस पूछी हूँ. एकदम बेसिक क्वेश्चन है. Species is a biological species is a group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring. Okay, species क्या है? Group of organisms that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring. The term species can also be defined as a most category in the system of taxonomy. ओके, सो इकोलॉजिकल स्टडीज जो है वो हेल्प करते हैं डिटरमाइनिंग करने के लिए टेक्सोनॉमी में. स्टेटस ऑफ अ स्पेसीज मींस इकोलॉजिकल determining status of the species. Okay. Okay, ma'am. On developmental morphology, culture experiments and other analytical data. मीन्स हम किसके बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं? बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी, कल्चरल एक्सपेरिमेंट्स एंड अदर एनालिटिकल डाटा. ओके, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट सेम यहाँ पे दिया हुआ है जो नोट्स में है. Ecological studies can help in determining the taxonomic status of a species on the basis of developmental morphology, culture experiments, and other analytical data. The two species, यहाँ पे दो स्पेसीज दिए हुए, लिंडरबर्जिया पॉलियंथा एंड यूट्रिसिफोलिया. ये दो स्पेसीज है, लिंडरबर्जिया पॉलियंथा एंड यूट्रिसिफोलिया have been demonstrated to be ecotypes. इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है इकोटाइप ऑफ द सेम स्पेसीज. ओके, ने इकोटाइप भी एक्सप्लेन की. व्हाट इज इकोटाइप? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, normally a subdivision of a species that is adapted to a specific environment. So ये जो दो species है ये demonstrate होते हैं to be ecotype of the same species, the former being a colliculus or a miniature form of the latter. मीन्स दो फॉर्म में यहाँ पे वो स्पेसीज है. एक है कॉल्सिकलस फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, और मिनिएचर जो पॉलियंथा है वो बिग होगा, बिग फॉर्म में होता है, कॉल्सिकलस फॉर्म में होता है. और दूसरा जो है यूट्रिसिफोलिया वो मिनिएचर फॉर्म में होता है. ये दो स्पेसीज है. तो हम लोग बाय द हेल्प ऑफ इकोटाइप हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं ये दोनों स्पेसीज को. ओके, the two species of Linderbergia, Polyantha and Nutricifolia have been demonstrated to be ecotype of the same species, the former being a colliculus or a miniature form of the latter. Then next family है next species is the Euphorbia thymifolia, exhibit ecotype differentiation in response to be a calcium contained. हम लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते. किसको? इफोर्बिया थाइमिफोलिया को. exhibit ecotypic differentiation in response to the calcium content of the soil. The red ecotype is a facultative calcicole. Okay, and the green जो red plant है, red plant ecotype is a facultative and green one is a obligate calcifuge. The red plant show
थ्री फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन की, इफोर्बिया थाइमी एग्जिबिट करते, डिफरेंशिएट किस पे होता है, यहाँ पे है इको टाइप है, टाइप और अ ग्रीन प्लांट। तो रेड इको टाइप इज अ so the red plant show three physiological distinct ecotype. Okay, so depending on the soil exchange, Borevia diffusa, then Gomphrena, Gomphrena cellosoids, okay, then and Macardonia dianthra give rise to a appropriate calciculus and calcifugus ecotype. ये दो फॉर्म्स है। Euphorbia hits, ये अभी थ्री फॉर्म्स, वन upright, upright फॉर्म है, growing in a protected habits, जो upright फॉर्म होगा वो protected habits में grow होता है, either distinct eco other prostate, the latter also appear as a compact of the footpath, दूसरे होंगे वो फुटपाथ पे ग्रो होते हैं, एंड डिफ्यूज वन ऑफ द ग्रास interconvertible in transplant. Okay, पहले लेंडरबर्जिया की, देन इफोर्बिया थाइमीफोलिया, इफोर्बिया हिर्टा। ओके, यहाँ पे टेक्सोनॉमी in relation to ecology